उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए it is quite exemplary and not seen from new actors. I've got a great hope for her future. Jyotika ma'am, please. So the biggest surprise for me was seeing Ajay the way he conducted himself all through the shoot. मैंने बहुत सारे हीरोज के साथ काम किया है, almost all down south. Recently मेरी last film मम्मूटी सर के साथ थी और अब इस फिल्म में भी अजय के साथ I just learned one thing after so many years कि how you just give away. उन्होंने बहुत I mean selflessly ये पिक्चर की है and he's just give even poster में I don't know मैं when I do a film in South also with my heroes कौन इतना poster में डालता है मतलब it's been a pleasure to watch Mammootty sir and Ajay and to see such these are the real stalwarts of cinema I feel. You know लेते तो सब है देना बहुत I think rare है so they are giving back to cinema I think that's great. And of course Maddie and me हम 20 साल के बाद पिक्चर वापस कर रहे हैं तो I think it's a growth for an actor कि आप हीरो हीरोइन के बाद जब आप एक किरदार में परफॉर्मेंस देते हो I think that shows that makes us feel there's a different relationship altogether. 20 साल बाद जब मैंने इनको बाहों में लिया था दोनों इमोशंस टोटली डिफरेंट थे. और of course I don't have to say about the kids like Janki though is the hero of the film and both of them it was I can't say competition में था हम सब अपने रोल में इतना बैठ गए थे कि it felt like a family. I think picture भी 25-30 दिन में खत्म हो गई because we were all just flowing with it. So I think सभी का impact इस पे कुमार जी and thank you for casting me. मतलब मैं इतनी बार सबको thanks बोल चुकी हूँ क्योंकि for me to come back to Bollywood and get this kind of comeback it feels very special. Thank you so much. Thank you so much. तालियां. Before we wrap up the afternoon, we have some very important people जिनको मैं यहाँ बुला रहा हूँ एक final photo op के लिए, and we'll start with the writer of this film, Amil. Yes. 25 years. Yeah. जा रहे हैं भाई. Why after so many years? I think I got very busy in South and फिर I just got diverted and then waiting for something really special. I think at this stage you only want different work. So this was very challenging. But I must tell you, the first shot we took of Jyotika, we were all sitting there and we said, what a loss for 20 years for all of us. How could we not have her around us for 20 years and now we're going to make up for it. And विकास जी आपने इसमें राम से जैसे दिल्ली की आवाज और वो घंटी की आवाज नहीं रखी. वो तो मेरी निकल रही थी. मैं कैमरा के पीछे बैठ के मेरी घंटी बज रही थी. But it's not that zone. It's very real. Like Ajay said, how we every day put nimbu mirchi, kala tikka, dhaga, all of that. What do? We do that to prevent because we believe this happens. So it's in a very real space, and that's why there is no ghanti and there is no squeaky sound. Hi guys, good afternoon. Hey again, second center. I'm Abhishek from ABP Sancha Punjab. So इतने सालों से हम आप लोगों को काम करते देखते आ रहे हैं. आज इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ लगी कि एक्टर्स एक ऐसी चीज़ है इनको जितना भी खाली कर दो उसके बाद ये है मतलब कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया. I mean I only hope and pray that I can do justice to the kindness that has been shown to me by Ajay sir and his team, and I'm very grateful. So thank you so much. अजय जी शैतान को बनाने में तकरीबन कितने पैसे लगे होंगे? शैतान ये सब आपको बताएगा. कोई अरुण नल्ला. इसीलिए बताता हूँ. अरुण भाई जो कमाने वाला है उससे बहुत कम. Okay, we'll take one more question. Yes. Congratulations on the trailer. It looks amazing. My question is for Vikas. Sir, we have known you for directing drama, comedy, basically slice of life films like Movie and Super 30. And switching from that genre to the psychological thriller genre. I mean, execution-wise, what changes होते हैं about the shot taking, edit. So, what were your challenges being the captain of? हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री का छप जाता है. थोड़ा हाँ. But बाकी तो हर जगह होता है. तो कभी इस तरह से there are lots of मेरे बीच में बंगाली बाबा बहुत होते थे, वशीकरण की बातें करते थे. तो कभी इस तरह से कोई चीजें हुई या ultimately there are message also like a strong message you try to give through the film. This is ये चीज सही है गलत है.
गलत तो सबको पता है कि ये गलत है, उसमें कोई मैसेज देने की जरूरत ही नहीं किसी को, लेकिन जो कोशिश करते करने की, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब होते होंगे, लेकिन जो कोशिश करते करने की वो कोशिश तो करते ही हैं। तो फिल्म के मैसेज की बात नहीं है, बट मैसेज जैसे हर फिल्म में होता है, इस फिल्म में भी है कि इवेंचुअली द गुड विंस, और जो शैतान की हार तो होनी है कभी ना कभी। Hi, here. Hi, this is Jyotika from India.com Z Media. My question is to all of you, in fact, that Ajay sir, आपने बोला that you have had experiences, and even if you haven't had experiences, what is the first thing that you should actually do if you experience something spooky out there? I think you should be mentally and physically, mentally strong, and internally strong, because what I believe is that if you weaken from the inside, the other person can overpower you. Yeah. So if your brain is strong enough, then I don't think anything can harm you. Yeah. So the little kid out there who's actually not being the kid anymore, आपके लिए film कितना emotionally difficult था? Because it is a film that might take a toll on your mental health, probably. And what were the exercises that you actually do to get into this character and not let this affect you? Yeah. कुछ नहीं, वो हंसते खेलते शॉट देता था, बाद में नॉर्मल भी हो जाता था। बिल्कुल। That's fantastic. We'll take two हाथ more नीचे करो। questions, okay? ओ भाई हाथ नीचे करो यार। In the middle, in the left middle. Yeah, here. Hi, I have a common question for Ajay and Maddie sir. So the question is, since we know Ajay sir is playing the hero and you are playing the antagonist, that's Shaitaan. But during the pre-production stage or something, have you guys thought about swiping the roles? It's been a while, Ajay sir haven't played the antagonist. He started shooting, Maddie said the first thing he told me is, why aren't you doing this role? Why have you given it to me? So I told him that I really feel for the character, the father. So I will not be able to do justice to the other character. It's a much stronger character though. But by the character I connect with, I wanted to play that. So now I'm going to make a very, very important statement actually. I have been in the industry long enough to know that I have been a huge fan of Ajay sir's work. I've not had much time to interact with him before this movie. And I have really seen him act, and I've been a huge fan of the way he emotes subtly and does the kind of roles that he does. And even during the publicity, he doesn't take any credit, walks away and keeps doing his work. But now I can tell you that if there's any Singham, the real Singham in the industry, it is this man over here who I've become a huge fan of. Wow. I'll tell you why. I mean, the film is over. The film is over. So I think he's doing a good work by starting off the. बहुत लोग हैं फोटो निकालने। More people will be, and I think it's one of my favorite songs. I'm sure sir मजा आने वाला है जब इसे देखेंगे. Now talking to the director साहब यहाँ पे. सर सबसे पहले तो मुझे बताओ ये ऐसे वाले कितने लड्डू खिलाने पड़े थे इस पूरी कास्ट को साथ लाने के लिए? Because this is amazing. कितना difficult था या आसान था? I think actually I didn't cast them. I think Ajay and Kumar ji and Abhishek cast me in this one. They called me and they said, do you watch horror? I said no. Do you watch dark? Let me say that. When I asked him, he says, when we spoke about the film, so he said, मुझे रात में बहुत डर लगता है, मैं horror picture देखता भी नहीं, डरूंगा कैसे? I said, अगर डर लगता है तो then you're the right person to make it. Right. Yeah, so I said no to all the answers and Ajay said, correct, you're the guy to do this. So I don't know how that worked out. But I think from the time we decided to do the film to the casting, it took us by 5 days. Because the first people we thought, I mean, Janki was our obvious choice to play this character. We couldn't look anywhere else. Yeah. Maddie, we just thought, let's just approach Maddie and say we'll do a negative role of this proportion, because this kind of a negative role has no, because when very senior actors do negative roles, they'll have a backstory to be like that, or they'll have some, there's nothing, this is relentless. And we approached him and he loved it and he said yes. Jyotika loved the role, she said yes. Right. Dhruv, we had to work very hard to chase and request, and then he gave us. Friendly. Madhavan sir was also nice in shooting. Yeah. And we were shooting in London and there was nobody to play with.
Not in the hotel, not on the set, no one. But you were eating all the time. But कुछ और चीज़ है. Then Jyotika auntie's son was visiting and she called me for a play date. So I met Dev Bhaiya and Yug Bhaiya. It was fun. We went on the lawn. We played football. And with Janki Didi, we went to almost every landmark in London. So it was fun. Thank you so much. Seeing you on like the big screen, I'm sure और ज़्यादा मजा आएगा. Thank you all for sharing all of that. जोरदार तालियां for him. Too intense. I think that's why he was cast for this. Ladies and gentlemen, the wonderful people behind this film. We'll start with the producers. Give it up for. she has outperformed everybody. Wow. Which is fabulous. This kid is damn good. And Jyotika के बारे में सबको पता ही है. Maddie के बारे में सबको पता ही है. So it was great. And जब ये this film was more about के जब scenes भी करते थे, so it was coordination of all actors. वो इतना अच्छा बैठ गया. That's I think what worked very well. So you're this doting father, loving husband, और यहाँ वो helplessness ना हम सब भी feel कर रहे. So कहीं ना कहीं ऐसा वो ideal family man जो आप बन गए हो, उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? Because we see you like that. I think it's not just about me. कोई भी इंसान जिसके एक फैमिली होगी, चाहे वो मैरिड हो ना मैरिड हो, बीवी बच्चे या बहन या माँ बाप, I think there is a sense of responsibility, or I think everybody takes responsibility for the family. Right. So मैं भी उनमें से एक ही हूँ. But आप बड़ा कमाल का कर देते हो. I think वो इंस्पायर कर देते हो लोगों को कुछ और करने के लिए. जैसे सर तुम क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. Thank you so much. Jyotika ma'am, this one's for you. It's so good to see you here. Thank you so much. And talking about this movie, the portrayal of the character that you're playing on this big screen. Talk to us about that. And when you were told about this, कितने लड्डू खिलाए थे? जी जी बिल्कुल. Amazing. अरे मैं थोड़ा सा अपनी ट्राई कर रहा था. जी बताएं. ये अपनी इंग्लिश ठीक कर रहे हैं. जी. Firstly, good afternoon, ellarku vanakkam and namaste. I think when it comes to a daughter, एक माँ से बड़ी वॉरियर और कोई हो नहीं सकती. और मेरे खुद के बच्चे exactly इनकी उम्र के हैं. मेरी बेटी इनकी जैसी दिखती है. So मुझे I didn't have to put any effort in performing actually. बस इनको देख के टप 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 आंसू आने लगते हैं. तो it is really a vision of a mother, the true vision. और मुझे लगता है कि जब पिक्चर में भूत होता है तो इतना डर नहीं लगता. पर जब रियल लाइफ में कुछ ये एकदम रियलिटी है, इसमें कोई भूत नहीं है, तो उससे ज़्यादा डर लगता है कि हाँ ये हमको हो सकता है. So I think it's काफ़ी डरावना. काफी डरावना. Helplessness is what हम वो feel कर सकते हैं यहाँ पे. Is what I want to say. You want to add something to that? Right? मुस्कुराहट देख रहे हो आप लोग. कुछ तो आने वाला है यहाँ पे. जानकी, this one's for you. Thank you so much for that wonderful performance. Like बड़े पर्दे को एकदम ऐसा और bright कर दिया आपने. With these people, जब ये उस फ्रेम में है, आप भी of course you worked इससे पहले, अच्छा काम बहुत किया है. But this time, how was it? Well, it was actually quite surreal क्योंकि जब मैंने पहली बार अजय सर को देखा था, माधवन सर को देखा था, ज्योतिका मैम को देखा था, I was actually awestruck. अंदर से मैं बहुत घबराई हुई थी. I was like controlling myself कि नहीं you are supposed to work with them, you have to be professional and everything, and I managed it a bit well on set, but जैसे ही रैप. Sweet, that's very sweet. Thanks. मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इसके आगे. Okay, great. तो अभी आपने अपनी choice, everybody, this was with your choice, ठीक है? आपने अपने tags choose करे, आपने अपनी कुर्सियाँ choose करी, उसके बाद एक नंबर बना है. सर आपका tag है 4123. 4123. ये नंबर मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये नंबर बन गया. अब ये 4123 इस नंबर हमको याद रखना है till the, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मिनट के लिए. 4123 के बाद टैग्स और चेस के बाद आता है तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. मेरे पास 5 लिफाफे हैं. उन 5 में से 4 के अंदर तो कोई रंग बिरंगा कागज है, येलो ऑरेंज ग्रीन ब्लू पर्पल, डजंट मैटर, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन एक लिफाफे के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा एम्बिशन थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन है, कुछ भी हो सकता है, ज्वेलरी, चेक है. मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को लगे कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, करती नहीं. तो एक और व्यक्ति स्टेज पर आएंगे जो सिर्फ जज बन के यहाँ पे खड़ेंगे. जज कौन बनेगा? श्रेयस जाएगा. ये जज. एनीबॉडी.
Public demand. Round of applause as he joins me on stage. मनोज. अरे हाँ, चलो उसका नाम मनोज. वो लिफाफे वहाँ पड़े हुए थे, हाथ नहीं लगाना, आप लिफाफे ले लो अपने हाथ में. ले लीजिए वो 5 लिफाफे अरुण जी, उसे मिक्स कर दीजिए ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, मिक्स. मुझे नहीं पता कौन सा लिफाफा कौन सी पोजीशन पे, अरुण जी मिक्स करेंगे तो अब तो 100% नहीं पता. लाओ दे दो. Can I have some music please? Take a 4. Very down. ये सारे वो कुर्सी भी खाली है वहाँ पर, so if you want to go there. क्या नाम है आपका सर? सोहेल जीतेगा. सोहेल जी आपके पास ऑप्शन नहीं है, नंबर 3 ही बचा है. सोहेल ही जीतेगा. नहीं कुछ काम नहीं बिगड़ रहा है यहाँ पे, सब ठीक हो रहा है, ठीक है. और सोहेल आपको कुर्सी चूज करने का भी मौका नहीं मिला, ठीक है. बेसिकली सोहेल ने कोई निर्णय नहीं लिया, ना टैग चूज करने का निर्णय लिया, ना कुर्सी चूज करने का निर्णय लिया, which is a little unfair. वो बेचारा डर रहा है यार. मैं चाहती हूँ कि आपको एटलीस्ट कुर्सी चूज करने का मैं मौका दूंगी अगर आपको चेंज करनी है तो, ठीक है. तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगी if you could stand up. हम 5 सेकंड के लिए म्यूजिक बजाएंगे. जब म्यूजिक बज रहा है, ऐसा कोई कल्चर नहीं जिसमें आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मतलब मूवी में तो हम देख ही रहे हैं आपके साथ होते हुए. कोई तेरी छुट्टी नहीं है, सब डायरेक्ट. मेरे साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. पहले हम लोग ऐसी जगहों पे आउटडोर्स भी जाया करते थे जहाँ पे हमारे साथ हुए हैं काफी केसेस. सो रिसेंटली अब कुछ नहीं हुआ, बट फर्स्ट 10-12 years of our career we've seen a lot of it. You have, okay. ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है. सर एक काम करते, इसको थोड़ा लाइट कर देते. सबने यहाँ मुंह मीठा किया, ऑफ कोर्स अजय सर क्यों रह जाए. कैन वी हैव द लड्डू का थाली प्लीज?